Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. I'm going to speak. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna. So, a little over 500 years ago, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared here in India, actually from where I live right now in Sridham, Mayapur in West Bengal. कुछ 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ भारत में पश्चिम बंगाल में प्रकट हुए, उस जगह जहाँ मैं अभी रहता हूँ, श्रीधाम मायापुर में. Sri Chaitanya Mahaprabhu is actually Radha and Krishna in one. श्री चैतन्य महाप्रभु दरअसल भगवान राधा और कृष्ण का एक मिलित रूप है. And he comes to freely distribute love of God. और वह इस जगत में अवतरित होते हैं सबको भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए. There's no price to pay. When Lord Sri Krishna came, his command was abandon everything, give up everything and surrender unto me. और भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवत प्रेम के लिए कोई मूल्य नहीं लेते. जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उन्होंने कहा कि सारे धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण लो. But Lord Chaitanya Mahaprabhu says, I only want one thing. I want you to love God. लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब लोग भगवान से प्रेम करिए. And because at his time of his arrival here, in so much chaos, so much pain, because they had forgotten who they were and who God was. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पूर्व इस जगत में जितने भी लोग थे वह बहुत ही मुश्किल, बहुत ही संघर्षपूर्ण स्थिति में थे, क्योंकि वे भूल गए थे कि भगवान कौन है, वे कौन है. So Lord Chaitanya, he came to distribute love of God.
तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए freely to anyone who would simply follow one simple request. बिना किसी मूल्य के सिर्फ इस शर्त पर कि वह उनकी एक बात मान ले. He said, you can actually understand God. You can realize the Supreme Personality of Godhead simply by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम भगवान का साक्षात्कार बहुत ही सरल तरीके से सिर्फ हरि नाम का जप करने से कर सकते हैं. There are not great austerities required. They don't have to make amazing offerings to the Lord simply to get love of Godhead. You simply chant this powerful Maha Mantra. तो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं करनी है, कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके भगवान को भोग की व्यवस्था नहीं करनी है. आपको सिर्फ भगवान के इस शक्तिशाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है. The founder of Charya of the International Society for Krishna Consciousness, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. Following in the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu, श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण करते हुए he thought this mantra, this Hare Krishna mantra, which was being chanted now here in India, उन्हें लगा कि यह हरे कृष्ण महामंत्र जिसका अब भारत में जप शुरू हो चुका था should not be simply for India, but should be for the whole world. उन्हें लगा कि इस महामंत्र का जप सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे संसार में होना चाहिए. So now the whole world knows the power of this Hare Krishna mantra. और अब पूरे संसार को इस हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति के बारे में पता है. And it is a practical example that you may chant this mantra all the time and never grow tired. और अब आप व्यवहारिक उदाहरण से देख सकते हैं कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमेशा कर सकते हैं और आपको कभी भी थकान नहीं महसूस होगी. You will not hear one song on the radio from the movies or wherever it came from that you can sing over and over and over and over again. आप किसी मूवी का कोई गीत या फिर कहीं से भी कोई गीत आप चुन लीजिए, आप उसको बार 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 नहीं सुन सकते. When I was a youth around 16 years old, जब मैं करीब 16 वर्ष का किशोर था, the most popular song in the world was by the Beatles. तो उस समय जो सबसे लोकप्रिय गीत हुआ करता था वह बीटल्स का था. Not everybody now even has heard of the Beatles, but they were the most important, influential group of musicians in the entire world. उस समय ज़्यादा बहुत लोग बीटल्स का नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन जो बीटल्स एक समूह था वह सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली संगीतज्ञों का समूह था. They gave us one song that everybody for so many days and months sang this song. तो उन्होंने जो गीत दिया उसे लोग कई दिनों महीनों तक गाते रहे. Now, 50-60 years later, nobody even knows the song. अभी 50-60 साल बाद उस गीत को कोई जानता भी नहीं. But back then, in 1966, everybody knew it. लेकिन उस समय 1966 में सब लोग उस गीत को जानते थे. Let's see if you all know it. You can all sing along with me. देखते हैं क्या आप सब लोग उस गीत को मेरे साथ गा सकते हैं. I want to hold your hand. I want to hold Your hand. I want to hold your hand. तो यह I want to hold your hand यह गीत उस समय बहुत लोकप्रिय था. Now try singing that every day for 50 years. तो क्या आप सोच सकते हैं कि आप 50 साल तक लगातार इस गीत को गा सकते हैं? You'll be like, I don't want to hold anybody's hand. तब आपको लगेगा कि नहीं मैं तो किसी का भी हाथ नहीं पकड़ना चाहता. I don't want to hear that again. I'm really tired of hearing that song.
मैं ये किसी का हाथ नहीं पकड़ना चाहता, मैं थक चुका हूँ इस गीत को सुनकर। But in 1966, it was top of the charts, the most famous group singing the most famous song. And now, in 2023, you laughed when I sang it. तो 1966 में यह सबसे महत्वपूर्ण समूह इस सबसे लोकप्रिय गीत को गाया करता था, लेकिन 2023 में अब कोई इस गीत को गाना भी नहीं चाहता। But let's try this one by Lord Chaitanya Mahaprabhu. He made very popular. लेकिन अब हम श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा जो गीत दिया गया है, अब हम उसे गाएंगे। Over 500 years ago, and here's how this one goes. तो उन्होंने करीब 500 वर्ष पूर्व यह गीत दिया और अभी भी वो चल रहा है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'll let you decide. What do you think? I want to hold your hand. तो अब यह चुनाव करिए कि आपको क्या सही लगता है। I want to hold your hand. Or Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'll leave it up to you. The decision is yours. तो मैं यहाँ आप पर छोड़ता हूँ, निर्णय आपका है। You can follow the Beatles and sing, I want to hold your hand. तो आप बीटल्स का भी गाना गा सकते हैं, I want to hold your hand. Or Hare Krishna.
या फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र भी गा सकते हैं। So we can see actually there is some difference there between the most popular song that made the Beatles a household name. तो आप देख सकते हैं कुछ तो अंतर है, भले ही जो सबसे लोकप्रिय गाना हो जिसके कारण बीटल्स घर घर में जाना जाने लगा, Or that older than that really amazing from the spiritual world, the eternal sounds of Hare Krishna. या फिर उससे भी पुराना आध्यात्मिक जगत का यह गीत, जो कि आध्यात्मिक जगत का यह गीत हरे कृष्णा। So we can see that there is some difference because the Hare Krishna Maha Mantra is not a material sound vibration. तो हम देखते हैं कुछ तो अंतर है, क्योंकि यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है यह भौतिक जगत का वाइब्रेशन नहीं है। Golokera Premadan Harinam Sankirtan. तो यह जो हरि नाम संकीर्तन है वह गोलोक का प्रेम धन है। So this sound vibration of Hare Krishna is coming from the spiritual world. यह हरे कृष्ण का वाइब्रेशन सीधे आध्यात्मिक जगत से आ रहा है। And by you chanting this vibration, you are connecting with the Supreme. And now you, at that particular moment, are in the spiritual world. और जब आप इस महामंत्र का जप करते हैं तो आप भगवान से जुड़ जाते हैं और उस विशेष क्षण के लिए आप आध्यात्मिक जगत में होते हैं। I want to hold your hand does not have any spiritual value at all. I want to hold your hand गीत में कोई भी आध्यात्मिक मूल्य नहीं है। In fact, I could sing blah 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 blah, and you get the same effect as I want to hold your hand. तो ब्ला 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 इस प्रकार से कुछ भी गाना और I want to hold your hand ये दोनों समान ही हैं। But by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, we just made spiritual advancement by that one chanting of the Hare Krishna mantra. तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के एक महामंत्र के जप से हम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। That is the power of that Hare Krishna mantra. यह हरे कृष्ण महामंत्र के जप की शक्ति है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in the Srimad Bhagavatam, the 11th canto, श्रीमद् भागवतम के 11 ग्रंथ में chapter 5, अध्याय 5 verse number 32, श्लोक संख्या 32 Krishna Varnam Trisha Krishnam Sangopan Kastra Parshadam Jagnai Sankirtana Prayer Yajanti Hi Sudameda Saha. यह श्लोक है कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम. Same thing. Okay. And translation of that, this you can repeat. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead. तो इस कलयुग में जो बुद्धिमान लोग हैं वह हरि नाम का सामुदायिक रूप से जप करते हैं. Who constantly sings the names of Krishna. उस भगवान का जो सदैव भगवान कृष्ण के नामों का जप करते हैं. Although his complexion is not blackish, यद्यपि उनका वर्ण
काला नहीं है, He is Krishna himself. पर वह स्वयं भगवान कृष्ण है। He is accompanied by his associates. वह अपने संगियों के साथ रहते हैं, Servants, अपने सेवकों के साथ रहते हैं, weapons, अपने अस्त्रों के साथ रहते हैं, and confidential companions. और अपने विश्वास पात्र साथियों के साथ रहते हैं। So this is describing the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन है। It's interesting that we say that Lord Chaitanya Mahaprabhu comes with associates. Okay, that makes sense. तो यह सुनने में थोड़ा लग सकता है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आते हैं, Servants, अपने सेवकों के साथ, weapons, अस्त्रों के साथ, and confidential companions. और विश्वास पात्र संगी। Well, it's easy to understand. His confidential companions are called the Panchatattva. वैसे यह समझना तो आसान है कि उनके जो विश्वास पात्र संगी हैं वे पंच तत्व हैं। Lord Nityananda, भगवान श्री नित्यानंद, Sri Advaita Prabhu, श्री अद्वैत प्रभु, Sri Gadadhar, श्री गदाधर, and Srivas Pandit. और श्रीवास पंडित। Those four associates, along with Lord Chaitanya Mahaprabhu, they make up the Panchatattva. ये चार पार्षद भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ पंच तत्व कहलाते हैं। So that makes sense. तो यह तो समझ में आता है। And Lord Chaitanya, he had so many associates. और भगवान के कई सारे पार्षद भी हैं। Simply by his chanting, everyone stopped what they were doing and just wanted to be with Lord Chaitanya Mahaprabhu in this Harinam Sankirtan movement. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के सिर्फ जप और कीर्तन को सुनकर सब लोग अपने सारे काम छोड़कर भगवान के साथ सम्मिलित हो जाना चाहते थे। But what about Lord Chaitanya's weapons? लेकिन भगवान के अस्त्रों का क्या? What did he bring with him? वह अपने साथ क्या लेकर आए? Machine gun? कोई मशीन गन, Knives? कुछ बड़े बड़े चाकू, Whips? कोई ऐसे चाबुक? He didn't bring anything like that. नहीं नहीं, ऐसा तो वे कुछ भी नहीं लाए। Why would it say his weapons? लेकिन यहाँ पर उनके अस्त्रों का वर्णन कैसे है? Well, Lord Chaitanya, he's all about giving you love of God. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु तो आपको सिर्फ भगवत प्रेम देना चाहते हैं। He didn't bring some atom bomb. वे कोई एटम बम थोड़ी ना लाए। Although the weapon he did bring acts like an atom bomb. लेकिन हाँ, वे कुछ अस्त्र तो लाए जो कि एटम बम की तरह काम करता है। Because when this Maha Mantra is chanted, it destroys क्योंकि जब महामंत्र का जप होता है तो वह विनाश कर देता है all illusion. सारे मोह को, I am this body. कि मैं यह शरीर हूँ। Gone. इस प्रकार से सारा अंधकार चला जाता है। No more illusion. You're not your body. कोई मोह नहीं, आप अपना शरीर नहीं है। I own this really nice car and I've got a great house too. तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो बहुत बढ़िया कार है, एक बहुत बड़ा घर भी है। वो भी ऐसे खत्म हो जाता है, Gone. चला जाता है। It's not yours, it belongs to Krishna. नहीं, यह आपका नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का है। What can I do? I have all this money and my family doesn't love me and soon I will be dead. What will happen to all my money? मेरे पास इतना सारा पैसा है, मेरा परिवार मुझे प्रेम नहीं करता, मेरे इस पूरे पैसे का क्या होगा मरने के बाद? Well, of course, if you laugh once, I'm going to keep doing it. तो मुझे मालूम है आप लोग एक ही बार हंसेंगे, मैं लेकिन बार बार ऐसे ही करते रहूंगा। That's what the Maha Mantra is able to destroy. Illusion. तो इस प्रकार से महामंत्र में इतनी शक्ति है कि वह मोह को नष्ट कर देता है। But like an atomic bomb, it simply destroys. Nothing good comes up from the atomic bomb explosion. लेकिन एक एटॉमिक विस्फोट जब होता है तो वह सिर्फ विनाश करता है, उसमें से कुछ अच्छा नहीं आता। Well, this Hare Krishna Maha Mantra
explosion, लेकिन इस हरे कृष्ण महामंत्र के विस्फोट के साथ it reaps benefits. इससे बहुत सारे उपयोगी चीज फायदे भी होते हैं. Imagine this. There is actually a path for you back to Godhead. कल्पना कीजिए कि आपके पास एक रास्ता है भगवान के धाम वापस जाने के Not लिए. only does the Hare Krishna mantra show you where the path is. ये हरे कृष्ण महामंत्र सिर्फ आपको रास्ता नहीं दिखाता. Now listen to this. अब इसे ध्यान से सुनिए. Every single time हर एक बार that you chant the Hare Krishna mantra, जब आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, you're taking one step closer to the goal up your path. तो आप एक पद आगे बढ़ते हैं इस भगवान के धाम जाने के रास्ते पर. Now, due to all our past lives, each and every one of us, we all have a unique, different path. तो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हम सबका एक विशिष्ट और अलग रास्ता है. Now, it is said that a birth in India is the highest human birth you can get. तो ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी का जन्म भारत में होता है तो सबसे उच्चतम मानव कुल में है. So I have to try not to be jealous of all of you. तो मुझे ऐसा प्रयास करना चाहिए कि मैं आप लोगों से ईर्ष्या ना करूं. For I, and this may come as a shock, am not from India. तो यह मेरे तो एक झटका के समान ही है कि मैं भारत से नहीं हूँ. If India is at the top, यदि भारत शीर्ष पर है, the number one birth for a living entity in a human body, जो यह नंबर 1 जन्म है किसी भी जीव के लिए. because your path, you've done some things that have been good in other births, got you this birth in India. क्योंकि आपने पूर्व जन्मों में कुछ भी तो अच्छा किया होगा जिसके कारण आपको भारत में जन्म मिला है. And then you've got somebody like me. और फिर उसके बाद कुछ लोग हैं मेरी तरह. My previous lives got me born in the hellish planet called United States of America. मेरे पूर्व जन्म के कर्म मुझको एक नरक के समान जगह में जन्म लेने के लिए. Hellish, you say? नरक कहते हैं आप अमेरिका को? Yes. And the illusion is the greatest of any country on this planet. हाँ, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति और मोह इस पूरी दुनिया में किसी भी देश में सबसे ज्यादा है तो वह अमेरिका है. But you grew up knowing about Krishna. लेकिन आप बड़े हुए भगवान कृष्ण के बारे में जानकर सुनकर. If I say Bhagavad Gita to you, यदि मैं कहूँ आपसे भगवत गीता, you may not read it every day. You may not be able to recite shlokas, but you've heard of Bhagavad Gita. आप हो सकता है प्रतिदिन भगवद गीता पढ़ते ना हो या फिर श्लोक का पाठ ना कर सकें, लेकिन आपने भगवद गीता के बारे में सुना तो है. If you say that to somebody from the West, prior to the arrival of His Divine Grace, Srila Prabhupada, we would just say, what? श्रील प्रभुपाद के आगमन के पूर्व यदि आप पश्चिम के देश में किसी से कहें भगवद गीता तो हम कहते हैं क्या? Having never heard of Bhagavad Gita. हमने भगवद गीता के बारे में कभी नहीं सुना. Having never heard of Krishna. हम भगवान कृष्ण के बारे में भी कभी नहीं सुने. How can that be a very good birth? तो यह एक अच्छा जन्म कैसे हो सकता है? But thanks to His Divine Grace, Srila Prabhupada, लेकिन श्रील प्रभुपाद का बहुत बहुत धन्यवाद. I can guarantee you that somewhere on this planet, right now, somebody, a group of somebodies, a large group of somebodies are chanting Hare Krishna. मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि इस दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ लोगों का समूह या फिर बहुत ज़्यादा लोगों का समूह हरि नाम का जप कर रहा है. And the more people that chant Hare Krishna, और जब ज़्यादा लोग जप करते हैं हरे कृष्ण का, the more spiritualized this planet will become. तो यह जो लोक है और भी ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. From Brihad Vishnu Purana. वृहद विष्णु पुराण से Namno hi avati shakti papa nirharane hare tavat kartum na shaknoti
Patakam pataki naraha. Simply by chanting one holy name of Hari. सिर्फ भगवान के एक पवित्र नाम हरि का जप करने से. Now here comes the good part. यहाँ पे एक अच्छा हिस्सा आता है. Listen to this. ध्यान से सुनिए. Simply by chanting one holy name of Hari, भगवान के सिर्फ एक पवित्र नाम हरि का जप करने से a sinful man can counteract एक पापी आदमी पार हो सकता है the reactions अपने कर्म फलों से to more sins अपने पापों से ज़्यादा than he is able to commit, जितना वो कभी कर सकता है. simply by chanting one holy name of Hari. सिर्फ भगवान के एक पवित्र नाम हरि का जप करने से. So from this, can we see the advantages of chanting this Hare Krishna mantra? तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का कितना लाभ है. The potency is magnified because actually there is more than one name of Hari in the Hare Krishna mantra. इस हरे कृष्ण महामंत्र की जो महिमा है, शक्ति है, वह कई गुना बढ़ जाती है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा हरि का नाम है. So if we are actually intelligent, तो यदि हम वास्तव में बुद्धिमान हैं, and I'm going to assume that everybody here right now is intelligent. और मैं तो यह मान के चलता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी लोग हैं वह बुद्धिमान हैं. Because there are other options besides sitting in the Gundicha Pandal and listening to Hari Katha. क्योंकि सामान्यतः लोगों के पास और भी विकल्प हो सकते हैं कि वे गुंडीचा पांडाल में बैठकर हरि कथा सुनने के अलावा भी कुछ कर सकते हैं. Well, you could always flip on your phone, put on Netflix and watch a really good Bollywood movie. आप अपना मोबाइल में इंटरनेट ऑन कर नेटफ्लिक्स पर एक बॉलीवुड की फिल्म देख सकते हैं. You will get so much action and adventure, great dancing and wonderful singing. तो आपको उसमें कितना ज़्यादा एक्शन, एडवेंचर, नृत्य, गीत मिलेगा. And you might be chanting whatever it is they chant in this movie while they're dancing. तो आप उस मूवी में वह गीत गा सकते हैं जो वह गाते रहते हैं और आप देखेंगे वो नाच रहे हैं. But by simply chanting one name of Hari, लेकिन भगवान का सिर्फ एक नाम हरि जप करने से, even if you watch 10 million Bollywood movies, यदि आप 1 करोड़ भी बॉलीवुड मूवी देखते हैं, you're not going to get a good effect तो आपको कोई भी अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा from watching Bollywood movies. यह बॉलीवुड मूवीज को देखकर. But by chanting one name of Hari, लेकिन भगवान का एक हरि का नाम जपने से all sinful reactions, सारे आपके जो पापमय कर्म हैं, and I'm sure we all have a few sinful reactions coming our way. तो हमें तो यह पता है कि हम सबके पास कुछ पापमय कर्म फल हैं. But here it is stating that all sinful reactions that you aren't even able to commit, तो यहाँ पर यह वर्णन है कि हमारे सारे पापों पे कर्म फल जो कि हम कभी कर भी नहीं सकते जितने पाप, you are able to counteract those reactions by simply chanting one name of Hari. आप उन सब पापों का सामना कर सकते हैं सिर्फ भगवान के एक पवित्र नाम हरि का जप करने से. So an intelligent person, he's going to be doing this chanting of the Hare Krishna mantra. तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जरूर से ही हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, did I forget to mention this? Probably turned it off. Yeah.
आज मैं यह बताना भूल गया, It's probably in everyone's best interest, since you're all sitting here, यह आप सब लोगों के लिए भले के लिए है, जो क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, to chant this mantra when it's your turn to chant. कि आप लोगों की जब भी बारी आती है तो आप लोग भी ये भगवान के नामों का कीर्तन करें. Yeah? Good करेंगे? idea? Good idea. यह अच्छा विचार है. Okay. I'm going to go get, what about 100? I'll go get 100 microphones and we can all chant really loud. तो अगर हमें यह 100 माइक मिल जाए तो हम जोर से जप कर सकते हैं. Oh, he's shaking his head. We don't have 100 microphones. लेकिन वह अपना सिर हिला रहा है कि हमारे पास 100 माइक नहीं है. Sorry, what? They just have to chant really loud? क्या सिर्फ उन लोगों को जोर से कीर्तन करना है? Oh, I hate to do this to everyone, but you're going to have to chant loud. तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग प्रत्येक व्यक्ति जोर से कीर्तन करे. Only we have the microphones. सिर्फ हमारे पास ही माइक है. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, I can't hear you. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And now from the Garuda Purana. It's on.
और अब गरुड़ पुराण में Is it? Yeah, it broke up. Okay. Avishena piyanami kirtita sarva patakaha puman vibuche sahada simha traster mriger eva. If one chants the holy name of the Lord, यदि कोई भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, even in a helpless condition, पूर्ण निराशा की स्थिति में भी, or without desiring to do so, और यदि बिना किसी इच्छा के भी यदि वह जप करता है, all the reactions of his sinful life depart. उसके जीवन के जितने भी पापमय कर्मफल हैं वह उससे दूर चले जाते हैं. Just as when a lion roars, जैसे उसी प्रकार से कि जब कोई एक शेर दहाड़ता है, all the small animals flee in fear. तो सारे छोटे जानवर डर के मारे भाग जाते हैं. Now most of us have probably experienced this. तो हम सब प्रायः यह अनुभव कर चुके हैं Something happens, you're almost about to have a car accident. कि मान लीजिए जैसे कि आपका लगभग एक कार दुर्घटना ही होने वाली है. Oh my God! हे भगवान! It's natural to call out to God when we're in a desperate, helpless situation. तो यह स्वाभाविक है कि हम एक अत्यंत विपदापूर्ण अवस्था में भगवान को पुकारें. Something really bad happens. We are climbing a mountain and we tumble into a big cave. तो कभी जैसे कि मान लीजिए हम कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं और हम फिसल कर एक गुफा में फंस जाते हैं. With this feeling of desperation, nothing, no one can help me but God. Please help me get out of here. इस संकटग्रस्त अवस्था से हमें कोई नहीं बचा सकता, तो हम सोचते हैं हे भगवान आप ही हमें बचाइए. This is a natural reaction of the spirit soul to please help me, God. तो यह आत्मा का स्वभाव है कि वह प्रार्थना करे हे भगवान हमारी सहायता करिए. So if we call out to Krishna, Hare Krishna, तो जब हम भगवान को पुकारते हैं हरे कृष्णा, it's the same as when we are in a desperate situation. We are in a desperate situation. तो यह उसी प्रकार से है कि हम एक संकटपूर्ण अवस्था में हैं क्योंकि हम वास्तव में संकटग्रस्त हैं. And this Hare Krishna mantra, it is us, this lead to God, please. हरे कृष्ण महामंत्र करिए. And that's why we say, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. We are pleading to God, please, I have fallen into this ocean of birth and death. Please help me get out of here. तो हम इसीलिए हरि नाम का जप करते हैं क्योंकि हम इस जन्म मृत्यु के सागर में फंसे हुए हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हे भगवान हमारी रक्षा करिए, सहायता करिए. Now Krishna, he is so merciful that even if we unknowingly chant his name, we get benefit. और भगवान कृष्ण इतने करुणामय हैं, इतने दयालु हैं कि यदि कोई अज्ञानवश भी उनका नाम जप करे तो वह उस पर कृपा करते हैं. Let's say you're about to go bowling. Do we do bowling here in India? No. Bad analogy. Let's go to the laundromat. Do we do the laundromat? तो जैसे कि मान लीजिए हम कभी धोबी के पास जाते हैं. You can go to Laundrorama for the laundromat. It's called Laundrorama. तो आप लॉन्ड्री एक धोबी के पास जा सकते हो जिसे लॉन्ड्री लोमा कहते हैं. And every time you say Laundrorama, you're getting a benefit. तो जब भी आप लॉन्ड्री रामा कहते हैं आपको फायदा मिलता है. And we can see, especially here in India, we see so many billboards, signs, certain businesses, they're calling themselves something Rama or Krishna this,
And every time we say it, there's benefit. तो हम भारत में देखते हैं कितने सारे बिल बोर्ड साइन बोर्ड्स लगे होते हैं जिसमें कुछ राम कुछ कृष्ण करके लिखा होता है, तो जब भी आप उसे पढ़ते हैं तो आपको फायदा मिलता है. Now that's some serious potency. You don't even have to be thinking of Krishna when you say it and you get benefit. तो इसमें कुछ अलग ही शक्ति है. आपको हमेशा भगवान राम या कृष्ण के बारे में सोचना नहीं है, बस आप कह देते हैं और आपको कृपा मिल जाती है. You can be a non-believer. You don't even believe in God. आप एक भगवान में विश्वास ना रखने वाले व्यक्ति भी हो सकते हैं. You can be walking down the street. One more. और आप His battery's going, I think. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Need a fan. Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I'll continue the story. तो अब मैं अपनी कहानी जारी रखता हूँ. You're walking down the street. आप सड़क से होकर गुजर रहे हैं You're not very spiritual. और आप कोई बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हैं. You really have no desire to know भी नहीं if there is God. और आपको इस बात से मतलब भी होते भी हैं. Down the street और अचानक से आप उस सड़क से होकर गुजर रहे हैं come a group of Hare Krishna devotees. और आपको एक हरे कृष्ण भक्तों का एक समूह दिखता है. And they're chanting Hare Krishna. और वे हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे होते हैं. And you get agitated by this. और आप उसको सुनकर विचलित हो जाते हैं. You Hare Krishnas, get off the street. अरे तुम हरे कृष्णा वाले सड़क से दूर जाओ. Krishna is so kind. भगवान इतने दयालु हैं You're mad at them. कि आप उन पर गुस्सा कर चिल्ला You रहे don't हैं. say Hare Krishna nicely. आप हरे कृष्ण अच्छे से बोले भी नहीं. And it doesn't even matter. लेकिन इसका तो कोई मतलब ही नहीं. You're still getting benefit for chanting Hare Krishna. आपको फिर भी हरे कृष्ण बोलने के कारण फायदा मिलेगा, कृपा मिलेगी. Now, in our scriptures, there is one particular person who is the epitome of getting benefit for chanting Hare Krishna in a negative way. तो हमारे शास्त्रों में एक ऐसा वर्णन आता है कि एक व्यक्ति को बहुत कृपा मिली जबकि वह हरे कृष्ण का जप नकारात्मक रूप से किया था. He was angry that the Supreme Personality of Godhead was more powerful than he was. तो वह इस बात से बहुत गुस्सा था कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वह उससे ज़्यादा शक्तिशाली हैं.
he was constantly thinking, I am going to kill that Krishna. I don't like that Krishna. I'm going to get that Krishna. वह निरंतर सोच रहा था कि मुझे यह कृष्ण पसंद नहीं है, मुझे वह अच्छा नहीं लगता, मैं उसे उसका वध कर दूंगा. His name was Kamsa. उसका नाम था कंस. His meditation was always on Krishna. उसका ध्यान सदैव भगवान कृष्ण पर था. He chanted his name all the time. Ah, that Krishna, Krishna, Krishna. वह हमेशा भगवान कृष्ण के नामों का जप करता था. कृष्णा कृष्णा कृष्णा. How is it possible that he can make advancement by being ready to kill Krishna? तो यह कैसे संभव हो सकता है कि वह आध्यात्मिक उन्नति करे जबकि उसका विचार था कि वह भगवान का वध करना चाहता था. But Krishna gave him his mercy. लेकिन भगवान ने उस पर भी कृपा की. Simply because he was meditating on him and saying his name. सिर्फ इसलिए कि वह भगवान के नामों का जप कर रहा था और उन पर ध्यान कर रहा था. So just like when a lion roars, तो जिस प्रकार से एक शेर दहाड़ता है, all the small animals run in fear. सारे छोटे जानवर डर के मारे इधर-उधर भाग जाते हैं. Similarly, the lion known as this Hare Krishna mantra उसी प्रकार से यह सिंह रूपी हरि नाम chases away all our bad habits. हमारी सारी बुरी आदतों को दूर भगा देता है. How does that work? यह किस प्रकार काम करता Well, है? this mantra is so powerful. Not only powerful, but enjoyable. यह मंत्र इतना शक्तिशाली है, सिर्फ शक्तिशाली नहीं, आनंदमय भी है. We're connecting with the supreme enjoyer, and he likes to give out this enjoy feeling to every name. हम परम भोक्ता भगवान से जुड़ते हैं भगवान के नामों से और वह हमें फिर आनंद का अनुभव देते हैं. Hare Krishna. हरे कृष्णा. Krishna's a little. हाँ, Krishna is so very kind. कृष्ण इतने ज्यादा कृपालु हैं. We can be angry at him, want to kill him. We get benefit. हम यदि उन पर क्रोधित भी हों, उनको मार डालना भी चाहें, फिर भी हमें फायदा ही देंगे वो. We can say, I'm going to the laundry Rama. We get benefit. हम यदि कहें मैं जा रहा हूँ लॉन्ड्री रामा, तो हमें फायदा मिलेगा. And if we say, Hare Krishna, और यदि हम कहें हरे कृष्णा, we get lots of benefit. तो हमें कई गुना ज्यादा फायदा मिलता है. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, from the Chaitanya Bhagavat, Ad Kanta 16.283. चैतन्य भागवत अंत्य खंड 16:283 से Japato harinamani stane shatta gunadika atmanam cha punat yucher japan shrotrin punati cha. Compared to a person who is attached to chanting japa, उस व्यक्ति से तुलना करते हुए जो भगवान के हरि नाम के जप से आसक्त है, the person who performs loud chanting of the holy name, वह व्यक्ति जो भगवान के पवित्र नामों का जोर से कीर्तन करता है, of Shri Hari, भगवान विष्णु हरि के नाम is का 100 times better. उससे 100 गुना बेहतर होता है. This is because the person who chants japa simply purifies himself. क्योंकि वह व्यक्ति जो सिर्फ जप करता है वह अपने आप को ही केवल शुद्ध करता है. Whereas the person who chants the holy name loudly, लेकिन जो व्यक्ति हरि नाम का जोर से कीर्तन करता है, in kirtan, कीर्तन में purifies himself, वह अपने को शुद्ध करता है, all those who are with him, और उन सबको जो उसके साथ हैं, and everybody else who hears the holy vibration. और हर प्रत्येक व्यक्ति जो उस पवित्र वाइब्रेशन को सुनता है. Of course, I'd like to end with this thought, that loud chanting of this Hare Krishna in kirtan is 100 times better than sitting and going, तो मैं इसके साथ लगभग विराम देना चाहूँगा कि यदि भगवान के नामों का जोर से जप किया जाए, तो यदि वह धीमे धीमे जप किया जाए उससे 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है. So chanting japa to yourself is good. तो यदि आप स्वयं के लिए जप करते हैं तो यह अच्छा है. But loud chanting in kirtan is the best. लेकिन यदि जोर से कीर्तन में जप किया जाए तो यह सर्वोत्तम है. Tonight, आज रात there are 3 devotees who have come to Ujjain to chant loudly in kirtan. 3 भक्त हैं जो आए हैं उज्जैन में जोर से जप करने के लिए कीर्तन में. 2 of my friends from Mayapur. 2 मेरे मित्र हैं मायापुर से. They will be playing electrical instruments like guitar and bass. वे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गिटार और बेस बजाएंगे. Stand up, Sarit, and show them the bass. सुरित प्रभु खड़े हो जाइए और अपना बेस दिखाइए. There it is. The other Prabhu is still sleeping, I imagine. Oh, he's walking like very slow towards here. तो जो दूसरे प्रभु हैं वो यहाँ पंडाल में धीमे धीमे आ रहे हैं. He saves all his energy for kirtan. वो अपने सारे ऊर्जा को कीर्तन के लिए बचा कर रखे हैं. And that third person, why, that would be तो जो तीसरा व्यक्ति है वह है me. मैं. हरि बोल. And I'm going to give you a real shocking statement.
और मैं बहुत ही झटके वाले वचन कहने जा रहा हूँ। I have a very loud voice. मेरी आवाज बहुत ऊंची है। I can see the shock on your face. Really? मैं देख सकता हूँ आपके चेहरे पर बहुत ही अचंभा है, वास्तव में। And I love chanting Hare Krishna. और मुझे हरे कृष्ण का जप अत्यंत प्रिय है। So set your little watches for this time. तो आप अपना समय ध्यान से नोट कर लीजिए। 10 minutes to 8 tonight. 8 बजने में 10 मिनट पहले, Just when a lot of people are starting to get into their evening relaxing mode. उस समय जब शाम को लोग थोड़ा अपना आरामप्रद मूड में होते हैं, We will be turning up the volume and chanting loudly in Kirtan. हम अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे और जोर से हरि नाम कीर्तन करेंगे। Who's with me? मेरे साथ कौन रहेगा? You're all coming? क्या आप सब आ रहे हैं? And you're going to chant loudly? और आप भी जोर से कीर्तन करेंगे? Well, I think it's time we practice because I don't know how good you'll do it. तो मुझे लगता है अभी इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम नहीं आप कितना अच्छा कीर्तन करते Should we हैं। practice? क्या इसका प्रैक्टिस करें? Hare Krishna! हरे कृष्णा। I could hear him. He's got the microphone. No mics this time. I want to hear. I'm not sure whether you guys actually qualify to be loud chanters. मुझे मालूम नहीं कि आप सब जोर से जब बोल पाएंगे कि नहीं, कीर्तन कर पाएंगे कि नहीं। Okay? Hare Krishna! Bring the next group in. I'm sorry. You're going to have to go. One more chance. Jose. Hare Krishna! Hare Krishna. Somebody behind me? That was loud. That was that you? Wow. Hare Krishna! Wow, not bad. The Mataji's over here, they're like, yeah. We got loud voices. We yell at our husbands all day long. माताएं जोर से बोल रही हैं, वो दिन भर अपने घर में पति पे चिल्लाती हैं। The men are, yep, that's right, that's right. तो माताएं ऐसा सोच रही हैं, मैं तो घर पे अभ्यास करती ही रहती हूँ। I'm noticing that some of these senior Matajis, they're like jumping out of the chair yelling, Hare Krishna! क्या कोई ऐसी सीनियर माता जी होगी जो ऐसे जोर से उछल के बोलेगी हरे कृष्णा? Okay. Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna. Krishna Krishna! Hare Hare! Hare Rama! Hare Rama! Rama Rama! Hare Hare! All right, you guys can come tonight. ठीक है, आप सब रात को आ सकते हैं। You're all invited. आप सबको आमंत्रण है। So that'll be 10 minutes to 8 tonight, right here. 7:50 पर ठीक इसी जगह पर Come for a little loud chanting. आप यहाँ पर थोड़ा उच्च स्वर के कीर्तन के लिए जरूर आइए। And of course, if you're in the mood, और यदि आपका यह मूड है and the chanting is making you feel ecstatic, कि यह जो कीर्तन है आपको आनंद परमानंद and you've देगा, got your hands in the air, आप अपने हाथ हवा में लहराना and you चाहते jump हैं out of your chair, और अपने कुर्सी से उछलकर नृत्य करना चाहते हैं, it's allowed. तो यह अलाउड है। Now, if you're over 80 years old, यदि आप 80 से ज्यादा आयु के हैं, is there anybody here 80 years old? यहाँ पर कोई 80 से ज्यादा है उम्र में? 70? 70? 70? Okay. I'll need to see a note from your doctor. Just kidding. तो मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर से परमिशन ले लें कि आप कर सकते हैं नृत्य कीर्तन। But the gentleman right here, there's two right here, right? The gentleman from South Africa, you're 70? 72. And you are? 71. I feel like a youngster. I'm only 70. तो यहाँ पे दो सज्जन हैं, वो एक 72 साल के हैं और एक 71 के। मैं थोड़ा कम उम्र का हूँ, मैं 70 का ही हूँ।
Well, I don't care how old you are. How old is this little... Is that a girl? Yes. Little girl right here. How old are you? Right here, right in the front. How old are you? छोटी बच्ची की उम्र क्या है? How old is she? Huh? It is a boy. It is a boy. Turn your head sideways. I thought you had pigtails in the back. So you're a little boy. Okay. How old are you? उसकी उम्र क्या है? 8 साल, 8 years. 8 years old. Okay, you can come tonight and chant. तो आप भी आ सकते हैं रात को कीर्तन में. Because Prabhupada says that even a child can chant Hare Krishna. क्योंकि श्री प्रभुपाद कहते हैं एक बच्चा भी हरि नाम कीर्तन कर सकता है. But tonight we're not going to invite any dogs in, even though Prabhupada said even a dog can chant Hare Krishna. श्री प्रभुपाद ने कहा कि एक कुत्ता भी हरे कृष्ण जप कर सकता है, लेकिन चिंता मत करिए, हम कुत्ते को नहीं बुलाएंगे. So old, young, male, female, saris, dhotis, everyone come tonight and chant Hare Krishna. Hare Krishna. The security guard, he's like one of the biggest chanters here. Do you see this? He's ready to yell at you, but then he goes, Hare Krishna. Right? Look at the smile. How can he be a meanie? He's a nice guy. Stop saying he's not nice. He's a nice guy. I'm just teasing you. Don't translate it, just in case he is a meanie. Just kidding. Okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Jaya Jagannath. Jaya Jagannath. Jaya Jagannath. Swami Jaya Jagannath. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Swami Jai Jagannath. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladeva, Jaya Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jai Baladeva, Jaya Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jagannath Baladeva Subhadra ki. Thank you, brother. Good. Another expert job. Jaya